after 7 years, when the elections were held, most of the eminent and high-profile names lost their election. So, to understand the democracy and to implement the democratic norms into nation and country is altogether different things. All the loopholes and the decadence and the implementation of such a great term called democracy going into the drains. This is the idea. We Indians are a race of talking very, very big things, karma theory and biggest democracy in the world. Or maybe this is the general trend all over the world. But just to announce that the biggest democracy and brag about it and bask in the glory of this term, biggest democracy, is our actually sign of decadence. This attitude is a liability for us. There are 2-3 factors. The first of all, this film is directed by my elder brother. Second, this is produced by his son-in-law, Bikram Bhullar. So these 2 factors did matter a lot. So therefore, I couldn't find any reason to say no. And then the concept. So all things combined. Mr. Ranjit Kapoor, who is my brother, is my senior, and Mr. Om Puri is also my senior. Mr. Satish Kaushik is also my senior. Seema is I am her senior, and Adil and Amir Bashir, very good actors, very potential artists. So somehow in this film, though I have not seen the film, but I hope and I expect some of the finest performances by these artists. I'll tell you one very interesting story. When one fine day the King of Cambodia asked his Prime Minister that I would like to introduce the democracy in this country. So his Prime Minister said that, Your Majesty, are you serious? The Prime Minister told the King that if you are serious, then you have to give me at least 5 to 7 years for our people and for all of us to understand what is the democratic procedure of governing a country. This is a way of governance, the democracy. The king told him, yes, you can do so. And the history tells us, then after 7 years, when the elections were held, most of the eminent and high-profile names lost their election. So, to understand the democracy and to implement the democratic norms into nation and country is altogether different things. We are a race of those people. There are hundreds of hindrances, obstacles in the name of religion, obstacle in the name of religionism, regionalism, language, customs, rituals. So we cannot have any kind of unity based on these values, religious or social or regional or linguistic. But we could imagine a unity based on nationalism. Unfortunately, that is also missing. So in a nutshell, it's just a brag. When time comes for Indian to implement the democracy, we find that, oh, no. There are certain laws or certain things which they try to incorporate in democracy procedure, but unfortunately, they were not far-sighted. They could not think that India will change so drastically in these years. So what we did, that we have to keep on going for amendment. And it's very essential. But the progress of Indian democracy or the state of Indian democracy, I consider it is still in infancy. The censor board chief, he claimed that he is following the routine norms and the rules and regulations laid by the law for CBFC. But his opponents are claiming that he is curbing the freedom of expression or something like that. Till I go and read and study what exactly are laws described in the Central Board of Film Certification,
I or nobody should pass a judgment. I can only itna say. I want to say that I'm not saying that what the chairman is doing is right, or I'm saying that his opponents are right. Let's study. Let's debate. Let's not discuss it. The common must know. I want to know. I want to study the laws. What are the laws? Films were doing very well a couple of years back. We Indians made commercially super hit films without using a single bad or abusive language. Tell me, a beautiful film called Chak de India. Do you find one single objectionable word? But then there are certain subjects where director tried to justify the scene or the ambience or the backdrop of a character or a concept, and if he is not doing that to play for the gallery, then I think even the cuss words they should be seen in a wider perspective. Why a character is using bad word just to play for the gallery? Then I think we must sit again and think about it. But if the concept of the whole film, if for instance, I'm just giving you an example, if Shyam Benegal is making a film on slum, or forget about Shyam Benegal, or a serious filmmaker is not playing for the gallery, but making a film on slum area, on the people, those don't have that kind of approach to life, they have abusive language, then you have to see the entire thing in a wider perspective, in totality. You cannot say that, how can you stop us? How can you curb this freedom of expression, this right? So I will not say, you understanding what I'm trying to say? Just, no, I'm allowing you to say Ma and Behan ki gali. No, it's not like this. Always remember, freedom or liberty is always within few rules and regulations. We belong to a free country, but it doesn't mean that on highway, there is only one highway in the world where there is no limit in driving. जितना दम है उतना कर लीजिए, और वे जर्मन हाईवेज हैं, ऑटोबान्स जिसको बोलते हैं. लेकिन बाकी हर जगह पर 80 के ऊपर की स्पीड चलाओगे तो कानूनी रूप से आप पकड़े जाओगे, आपके ऊपर दंड है. लेकिन आप कहोगे तो मैं तो फ्री कंट्री हूं. तो हमेशा फ्रीडम कुछ नियम और कायदों और कानून में होती है, ये ध्यान रखें. या विद रिस्पेक्ट, अगर एक फिल्म मेकर जेन्युइन है और जेन्युइनली एक सब्जेक्ट को जस्टिफाई करते हुए गालियां डालता है, जस्टिफाई पूरा सब्जेक्ट, देखो हरामीपंती समझ में आ जाएगी कि तुमने कहाँ पे क्या क्या, ये जनता के टिकट पाने के लिए तुमने आइटम नंबर डाला है, इसको मैं आइटम नंबर हूँ, वहाँ पर भी आपके समझ में आ जाएगा. समझ में आ जाता है यार. अब कोई एक कमर्शियल फिल्म अगर कोई बना रहा है और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो गाली, देखो मेरा कैरेक्टर ऐसा है. अरे यार, रियलिस्टिक कैरेक्टर है तो साले 5 गाने क्यों रख रहे हो तुम? ये शाणपत्ती करो ना काम. थोड़ी ईमानदारी रहे, जो नियम बनाने वाले हैं उनमें भी और जो फिल्म बनाने वाले हैं उनमें भी. ये ईमानदारी अगर आ गई ना तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा. आप पैसा कमा रहे हैं और आगे नेम प्लेट रखी हुई है एनजीओ की, समाज सेवा के, वो गलत है. पैसा कमाना बुरा नहीं है, ना ही एनजीओ चलाना बुरा है, लेकिन एनजीओ चलाते हुए धंधा करना बुरी बात है. बस इतनी सी सिंपल बात है. रामालिंगम इज, आई थिंक वट एवर यू सी, इट्स रिलीजिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years we finished the film. He's a manipulative man. There are few politicians in Indian political diaspora where you will find you will always see them most of the time sitting in the parliament. They manage somehow, they manipulate, they maneuver their career in such a manner that they are all the time acquiring a chair or a power. Whoopi Goldberg commented in one of the Oscar ceremony. She said that I'm really very happy to see the security over here, and I must say that the security has been tighter than the few faces sitting in this auditorium. So, very rare moments when a thought-provoking comment or a vision through words are expressed. I'm sorry, but so-called these
जो इंटेलेक्चुअल्स है ना, अरे बाबा बाबा, उनको सिर्फ बोलना है, कुछ भी बोलना है, उनको बोलना है। उनके बोलने में कुछ मीमांसा हो या ना हो, तत्व की बात कुछ हो ना हो, उन्हें बोलना है। और जितनी ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले यहाँ पर, उनको बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझा जाता है। फिल्म्स का काम समाज को एक थोड़ा सा दर्पण दिखाना है, बस इतना ही काफी है। लेकिन आप सोचें कि फिल्म्स कोई क्रांति ले आएंगी, तो क्रांति फिल्में नहीं लाती। फिल्म एक थोड़े मोमेंट्री आपके अंदर विचार की शक्ति ला सकती है कि विचार देख के आप इमोशनल हो गए, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है। लेकिन फिल्मों से क्रांति नहीं आती, क्रांति देश की जनता लाती है। जो 18वीं शताब्दी के में जो फ्रांस में क्रांति हुई, जो बास्ती का पूरा 20 जुलाई को जो टेनिस कोर्ट की शपथ जो ली जाती है, जैकोबियन क्लब और ये पूरा का पूरा जो होता था, वो फिल्में नहीं लाई हैं, आम आदमी लाया है। हमारे यहाँ तो 1857 का म्यूटनी हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसके भी पीछे बड़े कमाल के डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि विद्रोह आता है क्रोध से और क्रांति आती है विचारों से। इस देश में विचारों की कमी रही। जिस दिन विचार ऐसे भड़क पड़ेंगे ना, उम्मीद नहीं है इस देश में क्रांति की, लेकिन विचारों से आती है क्रांति। इतना ही काफी है कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, और जब आप बोलें तो मैं भी उतने ही मान सम्मान के साथ सुनूं। ये फर्स्ट जो बेसिक डेकोरम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके पॉलिटिशियंस जिस तरह का बयान पार्लियामेंट में देते हैं, ऐसा लगता है केजी क्लास के बच्चे बोल रहे हैं। एक तरफ आप हिंदू लोग जब हवन पूजा करते हैं तो उसमें नवग्रहों की स्थापना के साथ 16 देवियों की चावल की ढेरी के रूप में स्थापना करते हैं। आपके उसमें स्त्री को मान दिया गया, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने आते हैं, रियलिटी में जब जाते हैं, तो हम स्त्री का निरादर करते हैं। देखिए कैसे खुलेआम निरादर हो रहा है स्त्री का, और आप डिबेट कर रहे हैं उसके ऊपर। कोई एक्शन नहीं है। जब तक एक्शन नहीं होगा, ये डिबेट कितना करोगे? न्यायालयों को जागना पड़ेगा। ये जो पूरे न्याय की प्रक्रिया को इतना तेज बनाना पड़ेगा। कर रहे हैं डेफिनेटली। इस तरह के न्यायपालिका को चुनना पड़ेगा, इस तरह के लोगों को। ये देश और इस देशवासियों को समझना चाहिए कि इस देश में माइनॉरिटी में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, ना जैन है, ना बौद्ध है। इस देश में माइनॉरिटी में ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी इस देश का माइनॉरिटी है। ये ईमानदार आदमी जब तक आगे नहीं आएगा और निस्वार्थ भाव से मातृभूमि की सेवा नहीं करेगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश को पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं, सच बोलूं, इस देश को अब एक संत किंग की जरूरत है। चाहिए किंग मतलब एक ऐसा लीडर, लेकिन वो संत होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। उसमें हमारे नेता तो सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा कुछ करते नहीं हैं, और क्योंकि वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो जनता का ध्यान भटकाते हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से। ए समस्या को दूर नहीं कर पाते तो वो डी समस्या का नाम लेके पूरे प्रेस में हंगामा कर। देखिए, वो पॉलिटिशियन भी इस समाज का हिस्सा है, हम भी इस समाज का हिस्सा है, और मीडिया भी उस समाज का हिस्सा है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम में से ज्यादातर लोग ईमानदार हैं। हम सब करप्ट हैं, मीडिया भी उतना ही करप्ट है, फिक्र मत करो आप। पॉलिटिशियंस ही करप्ट नहीं है, मीडिया भी करप्ट है, जनता भी उतनी करप्ट है। ये सर।